Hello friends, today in the last lectures we have dealt with the equality principle and from article 14 to 18, and in the last lecture only we have completed till article 18. Now today we will be starting with article 19. What is article 19 and so onwards that is also known as right to freedom. So today we will be dealing with article 19. What does article 19 provides? It provides for the protection of certain rights regarding freedom of speech. आर्टिकल 19 के बारे में आज बात करेंगे और इसमें जो है आर्टिकल 19 में क्या चीज़ें हैं, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो बोलने की आज़ादी है उससे मुताल्लिक़ कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर, प्रोटेक्शन कैसे होगा उसका। तो आर्टिकल 19 says all citizens shall have the right to, मतलब it starts with all citizens will have the right to, and 19(1)(a) of speech and expression. So 19(1)(a), 19 clause 1, and this is part A, which I am be dealing first of all, that provides for freedom of speech and expression. So here this is clause 1, part A, speech and expression. And article 19(1)(b) provides for the assembly of peaceably, to assemble peaceably without arms, मतलब इसमें जो है वो peaceful assembly without arms. Article 19(1)(c) provides for to form the association and union. Article 19(1)(d) deals with to move freely throughout movement throughout India. E provides with to reside and settle in any part of India. Reside and settle in any part of India. And F is omitted. And G says to practice any profession or to carry out any trade. So these are basically the freedoms which are provided, certain rights regarding the freedom of speech. So first, in the very brief, I will be telling you that what is article 19(1)(a). So article 19(1) basically, as you might be seeing, you will get the soft copy of BA.LL.B in the study material. So you can see with that article 19(1) deals with the citizens of India, that all citizens should have the rights. Citizens मतलब natural और juristic दोनों, जो पहले भी बताया था, previously also we have dealt that citizens means natural citizen, that can be a male or female, and juristic person means the corporation. So section 19(1) basically deals with the citizens, that these freedoms or these expressions will be given to the citizen of this nation. So first of all, what is the first one in article 19(1), that is A, freedom of speech and expression. मतलब स्पीच का मतलब होता है बोलना और एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस कैसे भी कर सकते हैं आप, कोई लिटरेरी वर्क हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, और किसी भी तरीके से, बहुत से तरीके हैं उसके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, all these freedoms, they are not absolute freedoms, they are subject to certain restrictions. मतलब इसमें कुछ limitations, कुछ पाबंदियाँ, कुछ restrictions हैं
that we will deal in Article 19 Clause 2. So the thing is that it provides for freedom of speech and expression. Article 19(1)(a). So speech means that we have the right to speak with certain limitation that 19(2) deals, and we can express ourselves freely, and we can that can be in any of the way, meaning thereby any of the medium can be used in that regard. Now we are dealing with these articles briefly, so that we are not going into detail as we have gone in previous lectures, because we are giving these lectures for you to study regarding the entrance examination. So this will be enough for the level of the entrance examination. If we go in details in deep, that will be for the graduation students. So basically there are number of case laws. We are not dealing with case laws regarding censorship and pre-censorship and all those things. So what you have to remember is Article 19(1)(a). It is freedom of speech and expression. And Article 19(1)(b) deals with to assemble peacefully without arms. Peacefully without arms, peaceful assembly. Meaning thereby that a person has full freedom, number of persons, citizens have freedom to assemble पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब हम कहीं भी जो है वो असेंबल इकट्ठे हो सकते हैं, इसकी परमिशन है, पूरी तरह इजाज़त है, लेकिन बिना आर्म्स और एम्यूनेशंस के, मतलब बगैर हथियारों के आप कहीं भी कोई भी असेंबली कर सकते हैं. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज एंड ऑल दोज थिंग्स, सो यू कैन डू दैट, यू कैन असेंबल. And with this, there are number of case laws in which you can courts have given permission that for strike and for peaceful protest and agitations. So these come under the Article 19(1)(a) and (b). Now the third one is, that is C, to form association or union. So all citizens should have freedom, shall have the right to form association and union. What does it mean? Associations and unions means there are labor unions and there are unions of the workers, there are unions of different working communities, like for example in universities you have teachers union, there are students union, and all other unions. Number of bank and the employees in the bank, they have their own union, doctors have their own union, and these associations, administrative officers have their associations, their organizations. So एसोसिएशन एंड यूनियन का मतलब होता है कि हम जो है वो कोई भी सिटीज़न इंडिया का वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एसोसिएशन नंबर ऑफ पीपल जिसमें होते हैं, और यूनियन वो बना सकता है. ही हैज़ फुल राइट एंड फ्रीडम. डी डील्स विद द दैट दे कैन मूव फ्रीली. एवरी सिटीजन कैन मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब इंडियन टेरिटरी में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं आप, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि भाई कोई आदमी दिल्ली से बॉम्बे जाना चाह रहा है, वीकेंड को फ्रीली ईजिली, यू डोंट नीड एनी पासपोर्ट और वीज़ा फॉर दैट और एनी extra legal compulsion. There is no legal compulsion, and everybody has full right, every citizen has full right to move throughout the territory of India and to reside and settle in any part of India. मतलब कि किसी भी हिस्से में इंडिया के आप रह सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं. Many people you will find they are from say some place, some different place, and they settle and they do their occupation at some different places. You will find this. So these are the freedoms that are given in the Constitution under Article 19. The last one is the to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. मतलब every citizen shall have the right to practice. 19(1)(g) says to practice any profession. कोई भी profession वो practice कर सकता है. Meaning thereby he can be a doctor, he can be an engineer, he can be a businessman, he can be a advocate or any other profession. And to carry on any occupation, trade or business. मतलब कोई भी काम जो है वो कर सकता है और कोई भी बिजनेस सेटल कर सकता है लीगली. मतलब जिसकी कुछ चीज़ें हैं जो इलीगल हैं वो नहीं, लेकिन परमिशन है इन सारी चीज़ों की. और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये 19(1)(g) में कवर हो जाते हैं. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन दैट आर्टिकल 19 हैज़ basically 6
Clauses, sub-clauses, Article 19(1), all citizens shall have the right. The first thing is that it deals with the citizens and not all persons. Freedom of speech and expression, to assemble peacefully without arms, to form association and union, to move within the territory of India freely, to reside and settle in any part of India, and to carry out any profession, trade, or business or occupation. So these are basically the freedoms which are given under Article 19, Clause 1. Now the most important thing is that these freedoms, they are subject to certain limitations or certain restrictions. मतलब इसमें कुछ limitation, कुछ restriction जो है वो हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर रखी है क्या लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन होंगी इन फ्रीडम्स के ऊपर भी. दीज आर द फ्रीडम्स बेसिकली विच आर गिवन टू सिटीजन्स, एंड दीज फ्रीडम्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम्स, they have certain restrictions, certain limitations. So these restrictions and limitations are also provided in the next clause, that is Article 19, Clause 2. So we'll be dealing with Article 19, Clause 2. This provides with restrictions. So Article 19 provides that nothing in subclause A to J shall affect A to L, subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law prevalent in the state of making any insofar such law imposes reasonable restriction on exercise of rights conferred by the said subclause in the interest of. These are the criteria, these are the things on which it is imposed. The first is sovereignty and integrity. Sovereignty and integrity. The second is the security of state. Security of state. Friendly relationship with foreign state. Friendly relation with foreign state. And the next one is the public order, decency or morality. Public order, decency or morality. Contempt of court, and defamation. So these are the restrictions which are incitement of an offense. The last one is the incitement of offense. These are the basically restrictions which are provided in Article 19, Clause 2. So these grounds of restriction, you might be thinking that restrictions are more than freedom, but these restrictions are basically very important because if freedom is given in absolute terms, then that freedom will create an anarchist situation. No one will be controlled by law. And anyone having anything in his mind can express, so it will cause disharmony in the society. So these are the restrictions which are imposed on these freedoms. These are the freedoms, as I have told you, in 19(1), Article 19, Clause 1, A, B, C, D, E, F, G. These are the freedoms, and these are the restrictions in Article 19, Clause 2. The first restriction is in regard to sovereignty and integrity, meaning thereby everybody has this freedom of speech and expression, but it is subject to sovereignty and integrity of India. Means you cannot say anything against the sovereignty, or you cannot express anything
against sovereignty and integrity of India. The second is the security of the state, meaning thereby security of the state should not be hampered with these freedoms. Security of the state is of the prime importance. Security of the state, the second one is. Now the third one is the friendly relation with foreign states. These relates to foreign policy of the nation, of the state, which means that the country has friendly relations with many of the nations in the world, and that are bilateral relationships and different type of relationships for business and trade and for different purposes. So those relations should not be hampered or should not be affected by this expression or these freedoms which are given. For example, if India has a friendly relation with any state, for example, state X, and if anyone or the citizens of India, they will say anything defamatory or anything which is in the bad light for that nation or the people of that nation, then obviously the relationship will become bitter. So therefore it is that friendly relation with foreign states should not be affected. And now other is the public order. Public order basically means that one thing, there is law and order, and then you can understand is like this. This is basically law and order, and this is public order, and this is the security of the state. ये आपका अंदर वाला सर्किल जो है ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये बीच वाला जो से है ये पब्लिक ऑर्डर है, और ये जो है वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. दिस वाज बेसिकली हेल्ड बाय वन ऑफ द जस्टिसेस, वन ऑफ द जजेस इन द केस. सो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहता. तो लॉ एंड ऑर्डर उससे ऊपर होता है पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी disorder in the harmony regarding the group of individuals. Law and order can be regarding two individuals only, but public order means a group of individuals. मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर तो एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, लेकिन पब्लिक ऑर्डर जो है वो ग्रुप से डील करता है. इससे बड़ी चीज़ है कि भाई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप उसमें क्लैश ना हो जाए रेस की बेसिस पे या किसी और बेसिस पे जैसे भी. और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज द आउटर मोस्ट concentric circle. You can see that this is the outermost circle, this is the security of the state. So this is basically, this is easy to understand like this. And another one of the another restriction is decency and morality, meaning thereby that you cannot express or you don't have freedom to express certain things which are against the obscenity, which are against the decency and in favor of obscenity or morality. So what is basically these terms, decency and morality? This is basically explained by the Supreme Court in various cases. So we are not dealing with those cases because you don't need those cases at the entrance level. So this is something which is required when you go deep in studying the constitution, that is in the at the level of the graduation in B.A.L.L.B or L.L.B. So the freedom, there is restriction regarding decency and morality. You can understand what is decency and what is morality. Decency का मतलब क्या होता है, सभ्यता, और morality है ना. तो ये सब जो है decency and morality. और इसके बाद जो अगला the next restriction which is there is contempt of court. Contempt of court का आजकल बहुत मसला चल रहा है. You might be seeing the case of प्रशांत भूषण. So contempt of court जो है वो नहीं होना चाहिए उसमें. And another one is a defamation. Defamation कहते हैं मानहानि को. Defamation means के we should not defame anybody. मतलब freedom of speech and expression, ये सारे freedom इसलिए नहीं है कि हम किसी की बेइज्जती कर दें, या किसी ग्रुप की, या किसी रिलीजन की, या किसी कास्ट की, या किसी को भी मतलब जो है वो उसकी वो हो जाए अवमानना जिसे कहते हैं हिंदी में, कि वी आर डिफेमिंग समवन थ्रू आवर एक्सप्रेशन. आवर एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम
not for defaming anybody. Now the last one is the incitement of the offense. मतलब कि offense हमारी expression से offense जो है वो generate ना incite ना हो जाए. offense मतलब कोई इसमें जुर्म ना हो जाए. हमने कोई ऐसी बात कह दी कि religious sentiment hurt हो गई किसी की और उसमें वो मसला बन गया है. So these are the basically restrictions which are provided in Article 19 Clause 2. So freedom is provided in Article 19 Clause 1, A, B, C, D, E, F, G, like all those sub clauses of Part 1. So 19 Clause 1 deals with the freedom and Article 19 Clause 2 deals with restrictions. So these are the things which you should understand. Now the all other sub clauses says nothing in the sub clause B of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes to prevent the state from making law imposing in the interest of sovereignty and integrity, public order, reasonable restriction on the exercise of right confined in the sub clause. So these the next 3, 4, 5 clauses of the Article 19, they are not so important. So you have to basically understand these 2 clauses of Article 19. Now the thing is that we'll come to Article 20. Next is Article 20. What does Article 20 say? Article 20 says that protection in respect of conviction of offences. ये प्रोटेक्शन दे रखा है ऑफेंसेस में जो कन्विक्शन होंगे उनसे मुताल्लिक़. So they have 3 sub clauses. Clause 1 says no person shall be convicted of any offence except in violation of law enforced at the time of commission of the commission of the act charged as an offence, nor be subject to penalty greater than that which might be inflicted under the law enforced at the time of the commission of the offence. मतलब ऐसा पहला जो क्लॉज है वो डील करता है एक्स पोस्ट फैक्टो. वो जो है दैट डील्स बेसिकली विद कि नो वन शुड बी कन्विक्टेड. किसी को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते सिवाय उस एक्ट के जो उसने किया है और वो किसी कानून में जो है वो ऑफेंस है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट. मतलब जिस वक्त उसने वो एक्ट कमिट किया है उस वक्त वो कानूनन जो है वो ऑफेंस होना चाहिए. उसके लिए आप उसको सिर्फ वो कर सकते हैं और उसमें ही कैन नॉट बी चार्ज विद ग्रेटर पेनल्टी, ग्रेटर पनिशमेंट. मतलब ज़्यादा पनिशमेंट उसको नहीं दी जा सकती सिवाय उसके जो कि उस लॉ में प्रोवाइडेड है. दिस इज द फर्स्ट क्लॉज. नाउ सेकंड क्लॉज सेज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. क्लॉज 1 क्लियर हो गया. क्लॉज 1 सेज ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, उसी पे चार्ज हो सकता है, उसी पे कन्विक्शन हो सकता है जो ऑफेंस उसने किया है और जो एक्ट उसने किया है और वो ऑफेंस था इन लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट. सेकेंड इज नो पर्सन शैल बी चार्ज ट्वाइस, मतलब कन्विक्टेड 2 times फॉर द सेम एक्ट. मतलब मोर देन वंस लैंग्वेज है. तो प्रोसिक्यूशन किसी भी आदमी का और पनिशमेंट एक ही क्राइम, एक ही ऑफेंस पे 2 बार नहीं होगी. कि फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ मर्डर्ड, ए हैज़ मर्डर्ड बी, तो अब ए को जो है वो बी का मर्डर करने के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी. ये नहीं कि एक बार पनिशमेंट पूरी हो गई तो दोबारा केस शुरू हो गया, दोबारा पनिशमेंट दे दी जाए उसको, नहीं. सो दिस इज बेसिकली नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. फर्स्ट वन एक्स पोस्ट फैक्टो और दिस इज डबल जेओपार्डी. Now the third one is no person shall be accused of any offense. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. इसमें जो थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी accused जो कि किसी ऑफेंस उसने किया, नो पर्सन accused of any offense, किसी भी ऑफेंस में कोई आदमी जो कि accused है उसको इस बात पर कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ खुद ही विटनेस बन जाए. So this is something which is very important. So what this Article 20 deals with? First clause first deals with that no person shall be charged of any offence except the violation of the law at the time of commission of the act charged in the offence, nor he be subjected to penalty greater than
which has been inflicted under the law enforced at the time of commission of the act. कोई भी आदमी जो है वो सिर्फ उसी ऑफेंस के लिए, उसी एक्ट के लिए जो है कन्विक्ट किया जाएगा जो उसने किया, और करते वक्त वो एक्ट जो था वो ऑफेंस था लॉ में, और उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी लॉ में प्रोवाइडेड थी उस वक्त. दिस इज द थिंग. एंड क्लॉज बी सेज दैट नो पर्सन शैल बी convicted or prosecuted and punished for same offense more than once. मतलब कोई भी आदमी एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसको. और तीसरा है कि कोई भी कन्विक्ट खुद अपने केस में विटनेस नहीं बन सकता कि किसी को कोई है उसी से उसकी गवाही उसके खिलाफ दिलवा दिया. सो दिस इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 21. This is the most important article in this fundamental right. It deals with protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. And it says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Established by लॉ. कोई भी आदमी जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से उसकी नहीं छीनी जा सकती सिवाय उस तरीके के जो कानून के अंदर प्रोवाइडेड है. अब ये बात आती है, ये भी एक्सेप्शन है बेसिकली, एक्सेप्ट दिस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाट डज इट मीन. So there are a number of cases in this, and you will find that this clause is also known as residuary fundamental right clause. Residuary fundamental right clause, meaning thereby that all the fundamental rights which are not expressly provided in the constitution, and they are fundamental rights like right to free legal aid, right of the prisoners, and you can see that home dwellers right to shelter, right to food, all these right to environment, all these rights are considered as fundamental rights. And there are long list of rights which are considered as fundamental rights, and there is no provision in the constitution regarding those rights to be as fundamental right. So Supreme Court has basically inserted those fundamental rights through Supreme Court rulings through this article. So all those fundamental rights which are being added, जो उसके अंदर ऐड किए गए हैं fundamental rights, वो fundamental rights जो हैं वो article 21 के थ्रू जो है Supreme Court के अंदर एंटर किए गए हैं. So this is something which is very important. So this is also known as residuary fundamental right clause. So it says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So the thing is that there is very important case, Menka Gandhi versus Union of India, which basically widened the scope of Article 21. Article 21 का scope जो है वो life और personal liberty को उसने जो है वो ambit बढ़ा दिया. After that only they included the courts in different rules, through different rulings, included all the rights as fundamental rights which are there in Article 21. Through Article 21, these rights are made fundamental rights. The another thing is that life and personal liberty basically has been explained by the Supreme Court. That is something which we are not going into. That is something you need to study at the next level. So this basically this life and personal liberty means, in very short, I'll tell you that it's not mere existence. It means that there should be life with dignity. So dignified life जो है उसका मतलब होता है life and personal liberty. Now the thing is that what is meant by procedure established by law? Procedure established by law. Here it is provided na, procedure established by law. So procedure established by law basically means in A.K. Gopalan it was held. In the minority opinion was that procedure should be should also be considered as fair, just and reasonable. This was not exact wordings, but I am telling you just the summary and the intention of Justice Fazal Ali.
So it was basically in A.K. Gopalan. From the minority opinion, it was there. Now the thing is that what does this procedure established by law means? So after the rulings of different cases, the Supreme Court has held that it should be procedural due process. Due process. Due process. Now what does this due process means? Due process is basically the term from which has been borrowed from the US Constitution. It is there in US Constitution. Due process. Due process means just, fair and reasonable. Due process means it is provided a procedure established by law, and that procedure should be due process. It should be fair, just and reasonable. These प्रोसीजर अगर कोई भी फॉलो किया जाएगा तो वो खाली ये नहीं है कि लॉ है इसलिए मान लिया जाएगा, सब प्रोसीजर फॉलो कर लिया गया. वो प्रोसीजर का भी स्क्रूटनी होगी. दैट प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. वो प्रोसीजर भी सही होना चाहिए, वो भी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, अलटअप नहीं होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आर द थिंग्स विच आर देयर इन आर्टिकल 21. नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिकल 21 क्लॉज A. It deals with right to education. Article 21A, it was inserted. Article 21A. It was basically inserted in the Constitution in the year 2010. 2010 से जो है वो effect में आया है. So Article 21A deals with right to education. The state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years. In such manner as the state may by law determine. मतलब स्टेट जो है वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. दिस इज बेसिकली व्हाट आर्टिकल 21 क्लॉज A सेज. मतलब आर्टिकल 21 क्लॉज A में जो है वो ये डील किया गया है कि इसके अंदर जो 6 साल से लेके और 14 साल तक के बच्चे हैं इनको स्टेट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा एज दे डिटरमाइन बाय लॉ. मतलब उसके लिए वो कानून बनाएगा, वक्तन फवक्तन हर स्टेट के अलग होंगे, और वो उनको प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 21. नाउ आर्टिकल 22. दिस प्रोवाइड्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इन सर्टेन केसेस. आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 कैसे डील करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अरेस्ट और डिटेंशन जो होता है किसी का, उससे मुताल्लिक प्रोटेक्शन दे रखी है इसमें. नो पर्सन, क्लॉज 1 के अंदर है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में क्या दे रखा है? कोई भी आदमी जिसको अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, डिटेन किया गया है, उसको जो है वो ग्राउंड्स बताए जाएंगे अरेस्ट के जल्द से जल्द, और उसको जो है उसके पास राइट है कंसल्ट करने का और टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर और लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. मतलब अगर कोई आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके लिए जो है वो उसको बताया जाएगा किस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद जो है उसको पूरी आज़ादी होगी वो अपनी मर्जी का वकील हायर करे जिसको चाहे. And the second clause of this Article 22 deals with every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the set period without the authority of the magistrate. मतलब कोई भी आदमी जिसको अरेस्ट किया गया है तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है, उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जुडिशल ऑफिसर होता है, उसके पास ले जाना होता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके सामने प्रोड्यूस करना होगा. अब उसकी जुडिशल कस्टडी शुरू हो जाएगी. तो पुलिस जो है उसको 24 घंटे के अंदर उसके सामने प्रेजेंट करेगी कि हमने इसको अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके अंदर वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा जर्नी में स्पेंड होगा 24 घंटे से, उसमें excluding the time which is necessary for the journey. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट केस हुआ था विकास दुबे वाला, तो अरेस्टिंग कहीं हुई, वो कहीं होना था, वो तो बीच में क्या नाम है उसका वो हो गया
क्या नाम है मसला, एक्सीडेंट हो गया, फिर उसमें एनकाउंटर हो गया, तो वरना जो है वो जर्नी जो थी, क्योंकि वो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया, रिसेंट है तो आसानी है समझने में, कि दूर से लाना था उसको, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने ले जा रहे थे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम मध्य प्रदेश टू उत्तर प्रदेश, तो वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता। तो दिस इज समथिंग विच इज प्रोवाइडेड आर्टिकल 22 क्लॉज 2। और आर्टिकल क्लॉज 3 के अंदर इसमें ये दे रखा है कि ये एक और दो, ये फर्स्ट और ये पहले दो जो हैं क्लॉजेज, ये उसमें नहीं लगेंगे। जैसे कोई एनिमी एलियन है, कोई इस तरीके के उसमें है ऑफेंस में, या फिर एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किसी लॉ में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो फिर उस पर ये डील नहीं करेगा। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 years। उसके बाद कुछ उसकी अलग से वो है प्रोविजंस, अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो क्या है। लेकिन बेसिकली द मेन थिंग इज दैट विच यू हैव टू रिमेंबर इन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 and 2 दैट इज नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड और बी टेकन इनटू कस्टडी विदाउट इन्फॉर्मिंग। उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, उसकी मर्जी का वकील देना ज़रूरी है, दूसरा उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। सो दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22। सो वी वर डीलिंग विद फ्रॉम आर्टिकल 19 वी वर डीलिंग विद राइट टू फ्रीडम। दीज आर बेसिकली right to freedom. These are the freedom. This is the freedom of speech and expression, and these are all the freedoms. And then you come to Article 20. So you will find that there are freedoms regarding the offences, and in 21 you have this right to life and personal liberty. 21A is regarding the freedom of education, free education, right to education, and the 22 is regarding the arrest of the protection against the arrest and detention. So now we will be dealing with Article 23. Article 23, what it deals with? Article 23, it provides with the exploitation. These are right against exploitation, 23 and 24. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Traffic in human beings and beggars and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be offense punishable with accordance with law. सबको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग को, बच्चे को किसी को उठा के ले गए, जैसे किडनैपिंग हम लोग कहते हैं, किडनैप हुआ वो ट्रैफिकिंग होती है, उसकी पूरा एक सेटअप होता है कि अब वो जो है उसकी बिजनेस चल रही है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। और ऐसी फोर्स चाइल्ड लेबर जो है, फोर्स लेबर जो है उसकी परमिशन नहीं है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विसेज पब्लिक। सो दीज आर बेसिकली द रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फोर्स लेबर। किसी को जबरन आप मजदूर नहीं बना सकते इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। और आर्टिकल 24 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज। दिस इज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24। This deals with the no child below the age of 14 years. कितने साल से नीचे? 14 years. Less than 14 years में, अगर less than 14 years का है, shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment. कितने तरीके के? फैक्ट्री है पहले, फिर माइन, उसके बाद any hazardous employment. So Article 24 deals with, Article 24 किससे डील करता है? Article 24 deals with that no child below the age of 14 years shall be asked to work in any of the factory or in mine, किसी फैक्ट्री में या माइन जो खान होती हैं, कोयले की होती है और बहुत चीज़ों की होती है, और उसके अलावा हजार्डस जो नुकसानदेह एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो सेहत उसका नुकसान है। फॉर एग्जांपल बहुत ऐशेज़ या फ्यूम्स निकल रही हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का नुकसान हो सकता है, और भी किसी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और भी ऐसी हजार्डस चीज़ें होती हैं, तो दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन दैट। सो दीज आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23।
and Article 24. So today what we have dealt is that we have dealt with right to freedom and right against exploitation. So right to freedom starts from Article 19 and ends in Article 22. So I think I have made it clear, Article 19, from Article 19 till Article 22. And another thing is that we have dealt with Article 23 and 24, that is right against exploitation. So with this we come to the end of this lecture, and I'm again and again telling all of you in all the lectures, and today also I'm telling that if you have any query or you need any explanation of anything which I have explained is not clear to you, you are not getting it, so you can ask it freely with the organizers. You can contact, and you will be having the phone numbers of the organizers, management, and Mr. Kafil also, you will be having that number, and the director of this Make Easy classes, and you can ask it through any of the online mediums. Like we'll be having also this live interactive sessions any of the day. And the easiest thing is that you can ask is through, you can write down in comment box, or you can write down in through WhatsApp, and we'll answer and we'll explain that query. So with this, I think we have come to the end of this lecture, and I thank you all for listening the lecture. Thank you. So with this, we are left with few articles from Article 25 onwards in the fundamental right clause. So in the next lecture probably we'll be covering this part of fundamental right, and fundamental right will be you can say in one lecture. I think one more lecture it will take to complete the fundamental rights, and after that we'll start with directive principle of state policy. Thank you.